Okay, Mohit, right? Yes, So, how are you feeling right now? really good. Comfortable? Yeah, I'm very comfortable. Okay, so Mohit, introduce yourself in a brief. Good evening, sir. My name is Mohit Chauhan. I come from Ahmedabad, Gujarat. I have done my graduation from KK Shastri Government Science College from Ahmedabad only. Then I have done my post graduation from Gujarat University. After that, I have nearly 2.10 years, 2 years and 3 months, 10 months of experience in biotechnology related field. And currently, I am preparing for this CGPTM exam. Okay, what is your specialization of master? Sir, it's biotechnology. Biotechnology. Okay. Okay, Mohit, nowadays IPL is going on. How many teams are there in IPL? So 10 teams. 10 teams. Yes, Okay, currently you are in a right now in a Delhi, right? yes. So how was the experience of New Delhi? So the experience, I will say it's mixed. The infrastructure is good in Delhi, one thing, and transportation is also good. But the other thing is lack of proper sewage is there, and not proper dumping of what say garbage. Garbage is a major issue that I've seen today, Okay, well done. and Uh, not proper sanitation facilities also in the nearby area. Not it is not properly cleaned, so that is the thing. Okay, okay, got it. Mohit, as you are a MSc biotechnology student, so I'm expecting something to you. We have a DNA polymerase as well as RNA polymerase, right? And Okay. both kind of a polymerase has ability to polymerize. They are a relative stand like as a DNA as well as RNA. So, what are the basic similarities in these two type of a DNA polymerase as well as differences? So the basic similarities are first of all, as per their name, they both are polymerase. So they do the polymerization function in the respective sequences. So this is the major what's a similarity. Then their starting of their what's a polymerization that they both starts from 5 dash end from and continues to the 3 dash end. Okay, and the difference that lies in the is the what's processivity of the enzyme, as DNA has a processivity uh, 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 present, whereas RNA doesn't have the processivity present. So and Processivity. then there's structural differences also, as that is made up of DNA polymerase, and RNA polymerase has also structural difference. But I'm not much aware about all the structural difference. Okay, Mohit, suppose if I ask to you, what is the fidelity rate of a DNA and RNA polymerase? Then fidelity So rate, exactly in yeah, fidelity rate, fidelity. yes, the fidelity rate, I think it's 1 in 10,000 in DNA, but I'm not sure, sir, currently about. But exact data, which is I'm not sure, but it is 1 in 10,000 possibly, as per my knowledge. Okay, Mohit, suppose there are four options. That is, one is the DNA replication, transcription, RNA processing, as well as that is translation. So, if I ask to you, what is the that is gene expressions? So, which one of the following process will you exclude from the gene expression process? Transcription, replication, translation, RNA processing. That means which one is the not Sir, part of none. gene expression? None, sir. All of them are required. Okay, all of them are the part of gene expression. Yes, sir. So, can you define what is the gene expression? Gene expression is the expression of genes from DNA to finally protein, so in expression of proteins in cells. So the whole from starting from its DNA, a specific gene, then its mRNA processivity, and then after its translation into protein. So the whole process is known as gene expression. Mohit, can we consider DNA replication as the part of a gene expression? DNA replication, but I'm not sure, but yeah, we can actually, because
DNA replication will only produce gene. So I think from my side, I should say we can consider DNA As replication you also. answered previously, that is, there is a sequence from DNA to RNA, RNA to protein. This is called as the gene expressions. Then, if you are considering DNA to DNA making process, then it can be possible that is uh, considered into the gene expression process. Sir, I couldn't get you because there is a one disturbance, so I couldn't hear your question. Sorry. Okay, my question was that in gene expressions we include that is from DNA to RNA, RNA to protein, right? That is Yes. the whole process is known as the gene expressions. If we are talking about the DNA to DNA formation, that is DNA replication, would it be the part of gene expression? Sir, as per my knowledge, uh, I'm not sure firstly, but as per my knowledge, it should be because DNA replication will only produce new DNA strands, and that DNA strand would further lead to its transcription and translation. So from my side, yes, it should be included. It has to be DNA replication. Okay, well done. Mohit, as we know, the DNA polymerase always move in the direction of 5 prime to 3 prime, right? Yes, And there are two strand, and DNA polymerase will always move in the direction of replication fork, and the two strand have a opposite polarity. And how DNA polymerase manage the direction of 5 prime to 3 prime on the both strand? sir. On the for this DNA replication, there are two strands we get as a leading strand and lagging strand. In leading strand, it has the same complementarity and polarity. So there is no issue for its replication. It will move from 5 dash to 3 dash on the leading strand. For lagging strands, it produces Okazaki fragments. Yeah, it is not continuous. So specific DNA uh, uh, primers are added on small segments of DNA, and from that the DNA replication is continued, and then after that the RNA primers are removed and they are ligated by DNA ligase. Okay, well done, very good. Mohit, tell me one thing. In the process of that is transcription, one of the two strand of the DNA can be used as a template for the RNA polymerase. Why not Yes, two strands of DNA? Just only one? sir, because they have the same complementarity, I guess, the same complementary sequences that are present. And one thing is related to promoter also. The promoter recognizes the specific sequence, but I don't know detail about, but I guess a promoter recognizes a specific sequence from, and it starts from 5 days to 3 days. Okay, suppose I give a certain terms like as a coding, non-coding, template, non-template, and that is sense and non-sense strand. So can you classify among these two DNA strand according to the nonsense, coding, non-coding, as well as template and non-template DNA strand? Yes, sir. For template, yes. Template strand is the strand which is required from which the specific mRNA will be produced. So that is a template strand. Then coding and non-coding, the sequence which codes for protein or mRNA, whatsoever, not for protein, mRNA, that will be called as a coding sequence. And the third was for template, non-template, coding, non-coding, and the third was Sense and nonsense. the sense trend and nonsense trend. The nonsense trend which actually is used for mRNA transcription, nonsense trend, and the sense trend is not used for mRNA transcription. It is Mohit, known as sense. generally we call non-template stand also as a coding stand, right? Yes, yes. Why this happen? Why not Non, nonsense? That is non-template stand is also called as a coding stand. Is it right or sir, wrong? a non-template stand is coding, non-template coding. Yes, because of its sequence similarities with the DNA. Okay. So template stand can be called as non-coding stand. Templates stand. I'm not getting this. Sorry.
Okay, think about it. Definitely, you will find your answer. Okay, okay. Moving ahead, Mohit. There is a two terms in the reference of a genomic library. That is, one is the cDNA library, and another is the genomic library. What are the key differences between the genomic and cDNA library? The first the cDNA library. cDNA library is made up of using RNA dependent DNA polymerase. It is a cDNA. Okay, so from mRNA, cDNA is made. Okay, and from that cDNA, it is cloned and specific gene and its libraries are produced. And in genomic libraries, the whole sequence of the specific gene is taken. It is transcribed into a clone and expressed as a protein and stored as a library for use. Any more differences? It is just about the formation of DNA to RNA, RNA to DNA. What is the what in the reference of content? Suppose if you have a single cell and you prepare that is genomic library as well as cDNA library, what kind of a differences you will find? I'm not able to guess it right. Get it right. Okay, I Mohit, look into it. does cDNA library also contain that is non-coding sequences like as introns? cDNA, mRNA, mRNA. Um, yes, yes. Contain. Then tell me why there is a need No, for no, no, cDNA no, sir, library no, sir. construction? No, sir, no, sir. It Okay, won't. It why won't. there is a need It, of a CDN library if you have already genomic library? sir, gene expression properly because it is made up of mRNA and that will code for specific proteins. Ultimately, in CDNA library, we also constructing DNA molecules, right, from the RNA Yes. molecule. Then why there is a need to construct the DNA molecule from RNA if you already have a DNA molecule as in the form of Sir, genome? yeah, the mRNA would be what? mRNA will code for proteins, sir, specific proteins. And genomic, there will be introns and that present, but in mRNA it won't be. So specific expression of proteins for that. Okay, suppose Mohit, from a single individual, so we isolate two or three different kind of a cells, like yes, one from the that is liver cells, another from the brain cells, another from the stomach cells. Do all kind of a cells have same kind of a genomic library or CDN library, or there will be differences? So there will be differences. Why? So because the specific, even the organ from the specific organs that we are taking, they also produce some specific different type of proteins which are not produced by other. As liver produces some specific proteins which are not produced by our brain and any other organ, and that specifically goes to the brain and other organ. So, sir, there would be a difference in making that definitely. Okay, well done, very good. What is molecular marker, Mohit? So there are the specific sequence which are used by us to detect a sequence in a cloning or any experiment. Markers are used to detect a specific sequence present in our experiment. Any example of molecular marker? I know, but I'm not able to remember the Have you heard name. about I the know. RFLP, AFLP, Yes, yes, RAPD? RFLP, RAPD, and all RAPD, RFLP. Okay, among these, the basic idea of the DNA fingerprinting is based on what? RFLP, RAPD, It, AFLP, sir, it is based upon RAPD, I guess, but I'm not sure. RAPD, DNA fingerprinting. I'm not able to. It may be RFLP. I'm not sure. I Okay, need to okay, see no issue, because no issue. Leave it. Mohit, suppose like a DNA fingerprinting, can we have also protein fingerprinting? If no, then why? Have you the heard about the protein protein fingerprint, fingerprinting? yes, sir. The protein fingerprinting, I don't think so because specific individuals will have different level of expression of proteins. The same individual won't produce the same protein in our what's say inheritance also.
So I don't think so there will be a protein fingerprinting. Okay, that means the idea of the protein fingerprinting is not correct. Um, as per my knowledge, this mother it can't be said as not correct. There can be a housekeeping genes that are present in every human, and that are regularly transcribed and proteins are made. So that is one thing. But for specific identity in DNA fingerprinting, where there we need a specific inheritance where we are seeing. So there might be a possibility that the same protein is not expressed in uh, any generation, I guess. Okay, Mohit, RNA processing is happen via three process like as a capping, tailing, and splicing. If I ask to you arrange the synchronous process that is in order from beginning to the last, so what will be the order of RNA processing? Um, why does uh, capping, then it is like yeah, and then splicing, but splicing is last of all that I'm confused. But first 5 days capping, then 3 days and then splicing. I will go with this. What is the mean of capping? So the 5 days and specific sequence is added to protect it from getting degraded. Specific sequence means what? Like as ATGC or something else? No, so something else that is specific, but I am not able to recall its name. It is CAP or GU. Exactly, I'm not able to recall that name. That is specific. Or 5 days methyl nitrogen, something like that, but I'm not able to recall its full name. Okay, But it is related Mohit, to tell me one methyl thing. guanosine or something. Yeah, got it. Mohit, tell me one thing. Does prokaryotic cells also go for the capping process? No, sir. Okay, what is the prime function of capping? The prime function is for safeguarding the mRNA from getting degraded first, and so this is the one that, and then might help in expression also, but that is I'm not sure. Okay, okay, got it. So if there is no capping in the prokaryotic cells, then how prokaryotic mRNA is protecting from the degradation of such kind of cleavage like in eukaryotic? Sir, in eukaryotic, there's a difference because in eukaryote, mRNA is made in nucleus, then it moves in cytosol, so it needs some protection from getting degraded. In prokaryotic, the process is simultaneous, such because there is no movement of mRNA. There is direct transcription and translation taking place in prokaryote simultaneous. So from there, I think so that it doesn't need such protection because it is taking simultaneously in prokaryotes, transcription and translation. And in eukaryotic, in mRNA is transported from nucleus to cytoplasm, where it needs protection from cytoplasm and other environmental factors affecting it. Okay, well done. Mohit, is there any differences in eukaryotic and prokaryotic mRNA? Yes, sir. Heterogeneous mRNA is present in made in eukaryotes, not in prokaryotes. Heterogeneous includes intron sequences as well that they are spliced, and then a proper functional mRNA is produced, and that is used for gene expression. That is not present in prokaryotes. Okay, apart from these, that is RNA processing. Suppose eukaryotic RNA has to completed their RNA processing, and also bacteria has their RNA. Then after there is any differences? So one thing is mRNA, the that single mRNA in prokaryotes will code for many proteins. In eukaryote, it will code for a single protein mostly. There is a term of monocistronic and polycistronic, some that thing, because mRNA, single mRNA in prokaryote produce many proteins, as well as in eukaryote, it produces a single protein from single mRNA. Okay, Mohit, as we know, that is there is a addition of a nucleotide for the either for DNA or RNA synthesis, right? That is ATP, GTP, CTP, TTP, etc. And also in the case of RNA, there is a that is ribonucleotide and triphosphate.
So in prokaryotic as well as eukaryotic, the first nucleotide of mRNA will contain either three phosphate group or one phosphate group. Sir, one phosphate group. One phosphate Two group. phosphates are removed. In both cases. I need to see. I'm not sure about it. Okay. If I ask that is regarding DNA and RNA, then suppose eukaryotic cells synthesize DNA and also synthesize RNA molecule. The first nucleotide of that DNA and RNA from the fifth 5 prime terminal contain what? That is three phosphate or one phosphate. Sir, starting one contains three phosphate. The second one contains one phosphate. Okay, in all cases that is RNA and DNA also. Sir, I'm not sure in RNA. I'll need to see, but I'm not. It would not be present in RNA. Okay, but contain in the DNA. Yes, Okay, well done. Mohit, as you know, that is there are five different kinds of antibody in our body. yes. So can you specify and can you focus on the antibody D? What is the role and importance of antibody D in our body? Sir, the role of antibody D is not much clear yet. The only role that is we are aware of that it is useful in as a receptor and plasma cells, and which helps in differentiation of another antibodies. Okay. What is secondary immune response? So secondary immune response is the second time response to a same antigen of our human or say any organism which has uh, uh, encountered the same antigen. Okay, Mohit, apart from the subject, what do you like to do in his spare time? So in my spare time, I like to do cooking and dancing for specific garba, not other. When I watch cricket, I'm not able to play cricket. So who is your favorite cricket player? So for me, there are many. I can choose one depending on the situation. For leadership skills, I will go for Tony. For attacking skills, I will go for Chris Gage. And defensive skills, I will go for Dravid. So, and they all are required for a team. So we can't choose a single player. Depending upon the situation, I choose my player. So currently you are preparing for some government exam, right, Mohit? Yes, sir. I have started right now. Okay, except in these, that is CGPTM, what other exams you are preparing for that? Sir, GPSC and UPSC. UPSC and GPSC. Okay, so that means you will continue your preparations if there is no chance in CGPTM, right? Yes, sir, sure. Definitely. Okay. Okay, Mohit, nice to talk to you. Thank you. And it was nice sessions to interact with you. And now the session is open for you. If you have any query and questions and suggestions regarding your preparations and also for your real interview, so you can ask to me. And now the session is, we can talk in Hindi also if you feel comfortable in Hindi. Sure. ओके सो मोहित, जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, अगर उन क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ डाउट है तो अगर आपको याद है तो आपको पूछ लीजिए, मैं आपको ताकि आंसर्स दे सकूं। और इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उससे पूछ ये सकते हैं। ये ये फॉस्फेट वाला डीएनए आरएनए वाला उसमें मैं श्योर नहीं, मुझे अच्छा, याद ओके, नहीं आ रहा। अगर सपोज जैसे मोहित, अगर आपसे बात किया जाए कि डीएनए अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसाइज करेगा, उसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी जो होगा ना, वो मोनोफॉस्फेट कंटेन करता है, न कि ट्राइफॉस्फेट। ओके। जबकि आपका जो आरएनए आरएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसाइज करेगा, उसका फर्स्ट बेस पेयर जो होगा वो क्या करेगा? ट्राइफॉस्फेट कंटेन करेगा। दैट ओके इज तो मैं व्हाई ये डीएनए पॉलीमरेज नीड प्राइमर while RNA polymerase do not need any primer. ओके Because in case of DNA polymerization, there is a need of a 3 prime hydroxyl group. That's why the 3 prime hydroxyl group क्या कर रहा है? वो करता क्या है कि बेसिकली जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा होता है, उसके इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को क्लीव करने के लिए जरूरत होती है, राइट? और डीएनए पॉलीमरेज के पास जो मैग्नीशियम डाईवेलेंट कैटायन है, वो क्या करता है? 3 प्राइम OH के S को क्या करता है? वहां से खींच लेता है। दैट इज वाई, और आसानी से क्या करता है? वो जाकर के अटैक कर पाता है। तो इन केस ऑफ डीएनए देयर विल बी ओनली मोनोफॉस्फेट फॉर द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, बट वाइल इन द केस ऑफ आरएनए देयर विल बी 3 फॉस्फेट इन द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। आपने पढ़ा होगा कि जब आप कैपिंग की बात करते हैं, तो कैपिंग में क्या होता है?
कैपी में आपने पढ़ा होगा कि आरएनए का जो ट्रिपल फॉस्फेट होता है, पहले एक फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है, पढ़ा है आपने? यस, फिर इसके बाद जो यस, यस। जीटीपी मतलब जीटी हाँ, 5 याद है। में उसका दो फॉस्फेट निकाला जाता है। सो दैट वो इज नहीं। वाई कीप रिमेंबर कि यहाँ पे जो आरएनए होगा उसका फर्स्ट जो बेस पेयर होगा उसके पास बेसिकली क्या होंगे, तीन फॉस्फेट होंगे, जबकि डीएनए के यस। पास ऐसा नहीं है। ओके। सर, एंड वन मोर थिंग कि सर मुझे ये पता ना कि मैंने अभी मतलब सारी गेट, लाइफ साइंस, बायोटेक, जीसेट, नेट, डीबीटी, जेआरएफ कैटेगरी वन सारी क्लियर है अभी 2023 में। तो सर ये मुझे बताना है, और बताऊं तो कैसे बताऊं मेरे इंट्रोडक्शन में? ओके, अगर जैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड करना है कि सर आई हैव सपोज आपने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन की सर, आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड डिड माय मास्टर फ्रॉम देयर एंड आल्सो आई हैव अपीयर फॉर द सम इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम लाइक एस सीएसआईआर, डीबीटी, गेट, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एंड आई आल्सो क्लियर दिस these एग्जाम्स सिंपली। तो, और सर ये मतलब ये बताना ही चाहिए ना, बेसिकली बिल्कुल, लोग डेफिनेटली दीज आर द अचीवमेंट, आपको बताना चाहिए। सीएसआई नेट एग्जाम क्वालिफाई करना इजी टास्क नहीं है, ना ही कोई गिट। ओके। तो आपको उसको अपने, ये आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स में आते हैं। आपने अपने मास्टर्स के बाद क्या किया ये आपको बताता है, और ये एग्जाम को क्वालिफाई करने का मतलब होता है दैट मीन्स कि आपके पास अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पकड़ है। सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन ऐसे इजीली नहीं निकलता है, आपने दिया है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। आपको बहुत ओके। अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है सीएसआईआर एग्जाम के लिए, तब जाकर के आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। और नाउ डेज यस। गेट एग्जाम इज ऑल्सो वेरी गोइंग टू वेरी टफ। आजकल इतने ज़्यादा लोग अपीयर होने लगे हैं, इतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड्स में गेट के बेसिस पे जॉब मिल रही है, डीआरडीओ के डिपार्टमेंट में गेट के बेसिस पे जॉब मिल रहा है, पीएसयू कंपनी गेट के बेसिस पे जॉब दे रही हैं। तो गेट भी अब बहुत टफ होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके। एंड सर वन मोर थिंग कि मैंने 2023 में सारी एग्जाम्स क्लियर की। गेट दो सब्जेक्ट्स में, बायोटेक, लाइफ साइंस, फिर जीसेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, डीबीटी, जेआरएफ कैटेगरी वन, एंड नेट। एंड सर अपार्ट फ्रॉम इट जो मेरा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है 2.10 ईयर्स, मतलब 10 मंथ्स का, उसमें से मैंने तीन चार जगह पे जॉब किया है। फर्स्ट है इंटस फार्मा। मैं जॉब के साथ ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी, तो मैंने 2021 में गेट निकाल ली थी, 20 लाइफ साइंस और बायोटेक बोथ में। ठीक है, और वहां पे मैं ट्रेनी एग्जीक्यूटिव था। फिर वो जब मेरी निकली तो मुझे रिसर्च करना था, तो मैंने जीबीआरसी में एज अ जेआरएफ ज्वाइन किया। तो वहां पे भी मेरा अच्छा टेन्योर था 9 मंथ का। बट जैसा जीबीआरसी का मेन मोटो है कि वो स्टेट का लेवल इंस्टीट्यूट है, और गुजरात में उतना एक्सपोजर नहीं है बायोटेक का रिसर्च में। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो हमें encourage करते हैं कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाओ, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करो, मतलब वहां पे रहना नहीं है ज्यादा। हम्म। वहां पे आप सीखो, एक लर्निंग इन रिसर्च, एंड फिर आगे जाओ। तो सर मैंने ऐसे अप्लाई किया, और फिर मेरा एनसीसीएस में एज अ जेआरएफ हो गया था। तो मैं एनसीसीएस में सर जेआरएफ था, बट आफ्टर 1.5 मंथ मेरा स्टाइपेंड रुक गया। ठीक है, तो 6 महीने आया नहीं, एंड वो जल्दी आने भी नहीं वाला था। तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे चरोतर यूनिवर्सिटी में जेआरएफ ज्वाइन हुआ, और साथ में मैंने सारे एग्जाम्स भी निकाल दिए। ठीक है, और फिर अभी ये एग्जाम प्रिपरेशन था, और चरोतर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट था, तो वो 3 साल में पीएचडी कंप्लीट करते। एंड मेरे एग्जाम्स थी तो मैं वैसे भी नहीं करने वाला था, और वहाँ पे एक लड़के को वैसे भी वो लोग ले लेते, तो किसी का प्रोजेक्ट में हो जाता पीएचडी भी, तो उनका भी फायदा हो जाता, और मेरी भी एग्जाम थी तो मेरा भी हो जाता। तो वो सोच के मैंने अभी एग्जाम में ब्रेक लिया मेरे मतलब करियर में, और प्रिपरेशन इसका चालू किया। तो सर इसको थोड़ा मैं कैसे मतलब जस्टिफाई करूँ? और जो मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट है वो भी एनसीएमआर से ही है। तो अभी आप बेसिकली ये चाहते हैं कि आपका जो ये एमएससी के बाद का जो वर्क यस। एक्सपीरियंस रहा है अदर अदर प्रोजेक्ट वर्क में लेकर के एज ए जेआरएफ पोस्ट पे, उसको आप बताना चाहते हैं। हाँ सर, क्योंकि वो पूछेंगे कि आप मास्टर्स के बाद क्या किया, तो वो देखो सर जो आपकी आपकी मास्टर्स आपकी कौन सी ईयर में कंप्लीट हुई है? सर 2020 में हुई है 2020 में। मास्टर्स कंप्लीट। ओके, उसके बाद आपने यस। जॉब किया, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्स निकाले, है ना? हाँ, जॉब के साथ साथ ही मैंने कभी घर पे बैठ के नहीं किया, जॉब के साथ ही मैंने एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया और निकाला। सर इंटास में तो कैसा था कि ओके, वहाँ पे समझ गया। सैलरी कम आप थी और इसको इस रिसर्च तरीके से बढ़िया बता थी। सकते हैं मोहित, कि सपोज यू कंप्लीटेड योर एमएससी in 2020 and then looking for a research work and join as a JRA, that is junior research fellowship in some institutes, and simultaneously I was preparing for the some entrance exam like as a GATE, CSIR, DBT, etc., and I cleared that exam in 2023, and also appearing for this examination, that is CGPTA। तो वो शॉर्ट टाइम पे अगर आप बता देंगे कि आफ्टर एमएससी आपने एज अ जेआरएफ काम किया हुआ है, तो वो आपका एक तरीके से हो जाएगा कि हाँ आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। एंड सर वन मोर थिंग कि मेरा एक्सपीरियंस अब हर एक जगह पे हो गया है, इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च, और इवन एकेडेमिया भी।
तो सर उसको मैं ऐसा प्लस पॉइंट कैसे यूज करूँ, क्योंकि वो ही 3 जगह से पेटेंट आती है, और वो तीनों जगह पे मेरा थोड़ा थोड़ा मतलब 10 महीने या 1 1 साल का तो एक्सपीरियंस हो तो चुका है सब में। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सर आई हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस इन थ्री डोमेन्स ऑफ वर्क प्लेस लाइक एज एकेडमिया लाइक एज इंडस्ट्री लाइक एज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सो आई थिंक सपोज अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि हाउ डू यू फील दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर द CPDM पोस्ट, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। इन इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप बता सकते हैं कि सर एज वी नो दैट इज the patent files are come from three domains, that is academia, industry, and research community, and I have little bit experience of these three domain of the workplace like as academia and industry as well as research center. So ये point आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करने वाला है। अगर वो डेफिनेटली ये सवाल आपसे पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है मोहित कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट पे करने के लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ है, और दूसरा कि आपने अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग एटमॉस्फेयर में काम भी किया हुआ है, ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आपने काम किया हुआ है। तो आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पता है, आपके वहाँ का कल्चर मालूम है कि किस तरीके से काम वहाँ पे कराए जाते हैं। तो इस वाले लाइन को आप अपने इंट्रोडक्शन में मत बताइएगा, आप इस लाइन को तब पूछ बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्यों आपको लगता है कि आप एक फिट कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए। ओके एंड ठीक सर है, अपार्ट फ्रॉम आपने इट। अपने इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ अपनी एकेडमिक और बाकी आपने जो है ये नेशनल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए इनके बारे में, और करेंटली आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में आपको बता देना है। एंड सर वन मोर थिंग कि मेरे साइड से हो गया, आप थोड़ा भी इवेल्युएट करके बताइए कि कैसा रहा थोड़ा इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, मोहित अगर हम फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशंस पे अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन आपका ठीक था, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको सेशंस ये दूंगा कि जब आप इंट्रोडक्शंस फिनिश कर रहे हों तो आप उस टॉपिक पे फिनिश कीजिएगा जिससे आप चाहते हैं कि सवाल आपसे पूछा जाए। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपसे आपके गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशंस के बारे में पूछा जाए, तो आप अपना सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म कीजिएगा, सर करेंटली राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आप चाहते हैं कि आपसे रिसर्च के बारे में काम पूछा जाए जैसे आपने अभी बताया, तो करेंटली आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप उसको इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। राइट, तो इंट्रोडक्शन के लास्ट वाले जो पैरा, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होंगे ना वो आपके इंट्रोडक्शंस को ऐसे नॉर्मली सुनते रहते हैं, वो वेट करते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन आप कब खत्म करेंगे और उसके बाद अपना सवाल पूछना शुरू करते हैं। ओके। दूसरा चीज़ ये है कि आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ ठीक है, कुछ-कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पूछ लिया, और वो चीज़ें पॉसिबली सबके साथ में होती है कि इंस्टेंटली याद नहीं रहता है। अदरवाइज़ आपको सरफेस पे जो नॉलेज है वो सबका है, तो उस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने सिंपली आपसे पूछा कि दिल्ली का माहौल आपको कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आपने वहाँ पे नॉर्मल ना बता कर के उसको एज़ अ बायोटेक्नोलॉजी और एज़ अ इवैल्यूएटर के रूप में आपने बताया कि हाँ सर, यहाँ पे स्लज ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपसे किसी प्लेस के बारे में पूछा जाए तो आप इस ये बताइए कि सर यहाँ पे ताजमहल है और यहाँ पे बड़ी खूबसूरती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ के जो मेजर इश्यूज़ और मेजर चीज़ें जो लगती हैं उनको आप बताइए, जैसे आपने दिल्ली के बारे में बताया, राइट? तो ये चीज़ आपका अच्छा है। बाकी अभी आप मेरे ख्याल से ऐसे फॉर्मल ड्रेस में बैठे हैं, ड्रेस हिसाब किताब से आप रखे ही होंगे अच्छे हाँ तरीके हाँ से, है ना? तो कैजुअल जो शर्ट वगैरह हो उनको आप पहन करके जाइए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी हेयर स्टाइल वगैरह भी ठीक ही है, तो लुकिंग अच्छे लग रहे हैं आप देखने में। है ना? तो बस अपनी स्माइल को मेंटेन रखिएगा, वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, और वैसे भी ऑलरेडी इतनी सारी जगह पे काम करके आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आपको जब आपका टर्न आए तो अच्छी तरीके से आप एकदम कॉन्फिडेंटली एंड कामली होकर के अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शंस के लास्ट में वो चीज़ों को छोड़ के जाएँ जिस पे आगे आपसे आपसे बात हो सके। स्टार्टिंग का अगर आप 5 मिनट अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं ना, देन आफ्टर तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में हो जाएँगे, कोई दिक्कत ही होने वाली नहीं है फिर। ओके। ओके? और बाकी बस ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सब्जेक्ट हमको नहीं आता है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि मैं क्वेश्चंस ही ऐसे पूछता हूँ जिस पे आप थोड़ा रुकेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटरव्यू भी खराब जाएगा, आपके इंटरव्यू अच्छे जा सकते हैं और अच्छे होने के चांसेस बनते हैं। हाँ, थोड़ी-सी अपनी अवेयरनेस बनाए रखिएगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में टीम कितनी है? तो पता लगा, आप अगर आपको अच्छा लगा कि आपने तुरंत बता दिया कि सर इतना चल रहा है। कुछ लोग होते हैं कि जो कि पूरी तरीके से किताब में फ़ोकस्ड होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है ना? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस आपको अपने बारे में होनी चाहिए। जैसे आप ओके। गुजरात, आज आप अहमदाबाद से बिलॉन्ग करते हैं, राइट?
तो गुजरात के Yes. कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के भी थोड़ी आइडिया रख लीजिए कि हाँ, वहाँ के कौन से क्या हैं, किसकी पार्टियाँ चल रही हैं, क्या मेजर वहाँ के मतलब कि रेवेन्यू के सोर्सेस हो सकते हैं, और अभी जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा है। तो थोड़ा इस तरीके तरीके की जो चीज़ें होंगी वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, Okay. कल है आपका इंटरव्यू। Yes, sir. चलिए मोहित, तो अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू दे करके आइए, और इसके बाद आप बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। ठीक है, सो Sure. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू दीजिए, और बाकी कुछ दिक्कत होगा तो आप मैसेज करिएगा। ठीक, Sure, sir. ओके, बाय बाय।